HM number 1149. I think it's 1149. Namaste, everybody. Namaste, namaste. Wonderful to see all of you. And all of you joined me on YouTube. Namaste, everybody on YouTube. Welcome to this week's Happy Minds. Satyajit, Prashant, Ramdev. Wonderful to see all of you this very morning. I have so many of you have just moved on. I'm sorry I'm not being able to acknowledge your namastes, but wonderful to see all of you. Sir, I think you're not well. ये बताना जरूरी है क्या? We have had a namaste everybody. Nivedita, Parimal, Neha. Good to see Tej from Jaipur, from Delhi, from Kamlesh, from MP. ऐसा लग रहा है मुझे अब तुम लोग वहीं हो गए. And all of you have joined in new for the first time. Welcome to Happy Minds family, and I'm sure you're going to have a great time today and for the rest of the Happy Minds which you will attend. Namaste, Ganesh, Tejashri, and everybody. Actually, what we do in Happy Minds is we start with meditation and then we move on to success stories, a round of success stories. Today we have a few success stories and a few things which I will share with you. And today my throat, शायद आप लोगों को मालूम पड़ा होगा, my throat is asking for some rest. तो मेरा request रहेगा आप लोगों से कि आप लोग भी कुछ sharing करिए. And I would love to hear some stories from your side as to what you have done, what you've implemented, what has happened in your life, and maybe any questions you have, you'd like to ask me. So I would like to have a participative Happy Minds today, more than me speaking it out continuously for the next 1.5 hours, whatever time it is. My throat is demanding some rest, right? So मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, so that we have this awesome happening in the most awesome time. Last week has been very taxing, but very gratifying at the same time. Packed schedule tha. We had the 39th batch of our business leadership program, Ara Samasti, going on. So we had entrepreneurs for that. It was a wonderful session. Then we had our 10x entrepreneurs meet, and I was speaking on this concept called value creation and value added selling. It was fabulous and wonderful feedback we got from there. And then I had a personal coaching session, and I had a investor meet, and then yesterday we had the new batch launch of the 40th batch of our business leadership program, Rasamasti and the Game of Business. So another set of entrepreneurs joined us yesterday, and so I was there. And then in the night, I had a 3-hour training session for one of the companies which I am coaching, mentoring into. And here today I am with Happy Minds. And iske baad mujhe fir bhagna hai for a personal coaching. So these are public commitments which I cannot avoid. So push karta hu, pull karta hu apne aap ko jitna ho sake. Had it not been public commitments, maybe on doctor's advice, I would have taken rest. But there are hundreds of people waiting at times. So I cannot at the last minute kind of change it. And मेरी life की history में ऐसा हुआ नहीं कभी that people have gathered and I have not been there. So I kind of push. So मैं आप ही लोग मेरी family है तो आप लोगों से बोल सकता हूँ कि let's have a very participative HM today. तो रुपेश बोलता है हम साथ हैं sir. अरे वाह, thank you so much. God bless you. Vidisha, am I on full screen or how is it? Yes, sir, you are on full screen. Thank you for that. Okay, चलिए, I एक success story share करता हूँ with all of you, and this success story is from one of the Chrysalis called Praveen Beeche and his company or Orbital. मुझे याद है somewhere in 2011 they had come to me. All 5 directors had come to me and they said we want to be under your guidance, and Orbital that time was around 18-19 odd crores, and today they are around 180 odd crores. So I've seen last 10 years of growth in their organization. So he sent me a message, the MD of the company, Praveen, he sent a message. He said, sir, we got a splendid feedback, and it's one of the best testimonies we could have had from any of our clients. And he says we did a 20 crore project for a company in Jharkhand, which was a super bike facility. And वहाँ के जो project director हैं उन्होंने message भेजा. It's a long message, but I'm just cutting short for all of you. He sent me a long message. He says, you were not only very professional in the way you conducted your work, but the best human beings to work with in this selfish world. So ऐसा उन्होंने specifically डाला कि in this selfish world, you were the best human beings to work with
along with you being very professional. तो प्रवीण ने उस पे कहा कि सर ये ऐसा फीडबैक कभी नहीं मिला हमें, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड द कल्चर यू हैव बीन एबल टू बिल्ड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन Orbital. So I think this is something which just go to. So this is something which I feel can only happen if culture has become a very important part of the organization, and entrepreneurs have really worked hard on creating and building a culture which is सस्टेनेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो पिछले 10 साल से इन्होंने काफी काम किया अपने कल्चर क्रिएशन में, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी गेट अ फीडबैक लाइक दिस. सो ऑल एंटरप्रेन्योर्स जो मुझे सुन रहे हैं, डोंट टेक कल्चर लाइटली. इनफैक्ट मेरा सेशन जो हुआ फॉर एंटरप्रेन्योर्स फॉर द 39 बैच वाज ऑल अबाउट कल्चर एंड हाउ कल्चर इम्पैक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एंड ये एक ऐसा एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशंस में जो लीस्ट यू नो attention में आता है, and it's the most ignored in terms of the attention span of the entrepreneur or the senior leadership. तो लोग कहते हैं कल्चर में क्या काम करना है, लेट्स वर्क ऑन सेल्स, लेट्स वर्क ऑन मार्केटिंग, लेट्स वर्क ऑन प्रोडक्शन. तो वो तो जरूरी है, लेकिन ये सेल्स कौन कराता है, मार्केटिंग कौन कराता है, प्रोडक्शन कौन कराता है, लोगों का बिहेवियर कौन कंडक्ट करता है, लोगों की आदतें कौन डेवलप करता है, वो एक कल्चर है कंपनी का, वो संस्कार है. तो कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो वो उस संस्कार को अडेप्ट कर लेता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, एंड इट्स एन इनविजिबल थिंग. तो सेल्स एंड मार्केटिंग के फिगर्स दिख जाते हैं, प्रोडक्शन के फिगर्स दिख जाते हैं, मशीन्स दिख जाती हैं, लेकिन संस्कार जो है इट इज ओमनी प्रेजेंट, इट्स देयर बट इट्स नॉट विजिबल. तो जैसे घर में संस्कार होते हैं ना, तो किसको मालूम पड़ता है घर के संस्कार कैसे है? तो जो घर वाले हैं उनको मालूम पड़ता है, या फिर जो घर में आते हैं और रहते हैं कुछ दिन, उनको संस्कार मालूम पड़ते हैं कि घर के संस्कार कैसे. इन द सेम वे कंपनी में संस्कार कैसे हैं, जो कंपनी से डील करता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी द वेंडर्स, मे बी द कस्टमर्स, मे बी टीम मेंबर्स, उनको मालूम पड़ता है संस्कार कैसे. सो इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आज बिजनेस का सब्जेक्ट नहीं है, बट स्टिल आई वुड से दैट एज एन एंटरप्रेन्योर, सी इफ यू कैन फोकस अ लॉट ऑन कल्चर बिल्डिंग. कल्चर है तो परफॉर्मेंस होगा, कल्चर है तो आपका प्रोडक्टिविटी हाई होगी, कल्चर है तो आप देखोगे कि सस्टेनेबिलिटी लंबी होती है. एंड मेरा ऐसा मानना है पर्सनल लेवल पे, जिस कंपनी ने कल्चर खोया अपना, जो एक अच्छा तरीका होता है काम करने का, जिस कंपनी ने वो खोया उसने अपनी ग्रोथ खोई. जिस परिवार ने अपना कल्चर खोया तो उसने अपने अपने फ्यूचर जनरेशन खो दी. जिस सोसाइटी ने, जिस समाज ने अपना कल्चर, अपने संस्कार खोए, वो समाज भी लुप्त हो जाता है. So whether it be your family, whether it be your you know whatever culture we come from, and I think culture mein India is the richest of amongst all nations in the world. So the kind of culture we have with thousands of years as a background, तो बहुत rich abundant culture हमारा है. हमने कहीं ना कहीं the way we have been living our lives, we have kind of let go of the culture. और मैं अपने लेवल पे हर एचएम में या जो भी मेरे को मौका मिलता है, मैं हमेशा शेयर करते रहता हूँ आप लोगों से. तो होल्ड ऑन टू योर कल्चर, होल्ड ऑन टू हु वी आर, होल्ड ऑन टू द संस्कार्स व्हिच वी हैव गॉट फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड आवर फोरफादर्स. तो ये संस्कार हैं जो हमें एक सस्टेनेबिलिटी देंगे आगे तक, एंड आगे बढ़ेंगे, मॉडर्न तो होंगे, पैसा भी कमाएंगे, अच्छी जिंदगी भी जिएंगे, एवरीथिंग ऑल सेड एंड डन, बट संस्कारों को नहीं छोड़ेंगे. हु वी वर, अगर हमने उसको खो दिया टू बिकम प्रोग्रेसिव in the process of being progressive, अगर हमने अपने अंतर मन को खो दिया तो फिर क्या फायदा, फिर बने ही क्यों, फिर आगे बढ़े ही क्यों. सो मजा तो तब है जब we retain who we are and still we progress. So we retain the culture कि बच्चे जो हैं उनको सब गैजेट्स भी दिए हैं, उनको आईपैड भी दिया है, उनको आईफोन भी दिया है, उनको जो उनको चाहिए वो दिया है, लेकिन बच्चों के अंदर संस्कार भी है. If this can happen, it's one of the most awesome combinations. And as parents, if we are there, I think the best gift we can give to our children is not the car and the vehicles and the clothes and the all the things in the physical world. If we can give them a very strong foundation of culture, अगर हम उनको संस्कारों से भर दें, तो फिर हमारा कर्तव्य एज ए पेरेंट पूरा हो जाता है. एंड वो बच्चे फिर जो संस्कारों में बड़े स्ट्रांग होते हैं, फिर वो कहीं भी जाएंगे, कहीं बाहर पढ़ने जाएंगे, कहीं भी जॉब करेंगे, कहीं भी बिजनेस करेंगे, फिर आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है.
चिंता उनकी करनी होती है जिनके संस्कार बड़े कमजोर होते हैं, जो संस्कारों के फाउंडेशन को लेके नहीं चलते, उनकी चिंता करनी होती है। तो जो संस्कारों में स्ट्रांग होते हैं, फिर दे मेक देयर ओन लाइव्स, दे मेक देयर ओन पाथवे, फिर चिंता नहीं होती। So I think that's what as parents we should do, and that's what as entrepreneurs we should do. Create very strong fundamentals in terms of the culture side. तो आज के लिए इतना ही कल्चर पे। चलिए, आप लोगों की लाइफ में what is happening in life? So what is Ankit saying? Truly living to the value of no postponed. Hats off, sir. I would request you to take rest. Thank you so much, Ankit. Yes, मैं next week में रेस्ट ही ले रहा हूँ। ये कमिटमेंट्स ऐसी हैं कि I cannot, ये मेरे मेरे काम का श्राप है, या मेरे काम का एक बोलते हैं ना कि it's a part and parcel of my work that my work is more of public commitments. तो हर किसी को हक है, कोई पार्टिसिपेंट है, उसकी तबीयत खराब हो जाए तो वो नहीं आएगा, उसको चलेगा, लेकिन मेरी वजह से ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। So it's a work hazard that I have to push myself. But yes, it's always the love and blessings which I get from all of you that keeps me going, and I will take a rest. I think I know how much to stretch, how much not to stretch. So thank you, but thank you for your concern for that. चलिए, आप लोग बताइए, हाँ जी, what's happening in your lives? मुझे कुछ शेयरिंग आप लोगों की चाहिए, and then I will build a subject from there for all of you. I have something beautiful to share in terms of the habit side. But before I speak on the habit side, a few sharings from your side. And what is Sham saying? Sham says, so this is so true in every aspect of life. I feel like you read our mind and talk on the subject. So, Sham, I don't know, you're in Australia, you're back in Pune, I don't know. But yes, your daughter being in Australia, I understand that, what culture you have been able to inculcate in her, and that is what you must be connecting with. And I'm sure she will do well, and she's doing well there in Australia. So ये हम सब Indian parents जो हैं, mostly, I'm not that other parents are not doing it, but in at least भारत में जो माँ बाप हैं and हमारे generation के जो parents हैं, I think somewhere we have been blessed to have received a lot of insights from our parents. और अच्छा था कि उनके पास कुछ distractions नहीं थे हमारे parents के पास, तो उनके पास हम ही distractions थे, तो उन्होंने हमें बहुत ठोक पीट के कल्चरली बड़ा स्ट्रांग बनाया है, ऐसा मुझे लगता है। तो सब उन्हीं की देन है कि our parents have made us what we are today, and it is our responsibility that we kind of give it in whatever form to our children. So that's how it is. Why do we have, Amit ka ek question hai, why do we have fear so intense while starting or venturing into something new and big? Okay. अच्छा, मुझे ना आप लोग का I want some sharing on the you can raise your hand and I would love to have your mic on, and so that you share with me some insights happening in your life. Dinesh, मैं ये question अभी answer अमित करता हूँ. Let me have a few sharings. Dinesh, your mic is आप अपना unmute करो. हाँ. Good morning, sir. हाँ, नमस्ते दिनेश. नमस्ते. हाँ, बोलो. Yes, sir. अभी just last week से हाँ. जो business में काम चल रहा है, just we have done the annual meeting, और उससे टीम और पूरे कंपनी में बहुत से बदलाव आए हुए हैं. हाँ. और उसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट सेल में आया था कि एक टीम अलाइन हुआ है, और ऑलमोस्ट वी हैव क्रॉस आवर सेल्स टू 55 फ्लैट्स पर मंथ. जो अर्लियर वी वर रेशियो 30 में जा रहे थे, 30 फ्लैट्स हम बेच रहे थे, 35. हाँ. लेकिन उस अलाइनमेंट से और अभी जो मोमेंटम है आर समस्या के इम्प्लीमेंटेशन से काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सर. हाँ. वाह, फैंटास्टिक. आपको थैंक्स बोलना है. थैंक यू सो मच. बिकॉज ऑफ यू एंड हमारे लाइफ में आप आने से हम बोल नहीं सकते कि श्रद्धा और हमारे लाइफ में कितने बदलाव आए हुए हैं. रियली मैं हमेशा बोलता हूं कि भगवान की उपमा मैं तो देता हूँ मेरे जहन में आपके लिए, सर. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you, Dinesh, for sharing that. God bless. And these are the stories which kind of मैं कहता हूँ मेरा खून बढ़ जाता है 1-2 किलो when I listen to this.
कि आप अपने business को अच्छा कर पा रहे हो and your sales are improving, people are doing well, team is aligned, and I feel somewhere जो efforts हमने डाले, and Dinesh I know for last many years, and he was there with me in my life last year. Sorry, he was there with me in Arasamasti last year, and he's coming to my life this year. ऐसा he's coming to my life this year. So I feel that ये एक continuous growth, एक continuous learning process, एक continuous staying in touch with something better, something bigger is very important for all of us. कल भी बैच ने एक क्वेश्चन पूछा था कि that somewhere the energy goes after some days. ये होता है because we all, वो मैंने एग्जांपल दिया कि आपके पास अगर आप if you go back 100-200 years ago, तो पहले लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो दिए जलाते थे या मशाल जलाते थे. तो अगर मशाल जलाई, तो मशाल जलाने के कुछ समय बाद क्या होता था कि मशाल की लौ जो है वो कम होती थी. तो जब मशाल की लौ कम हो जाती थी, so it was simple for जिसके हाथ में मशाल थी, उसको समझता था कि यार इसकी लौ कम हो गई है, तो इसकी रोशनी या इसका जो भी आँच है वो कम हो गई है. So what he would do, he would not complain, he would not crave, he would not say ऐसे कैसे ये मशाल की लौ कम हो गई है. वो जाके वापस उस मशाल में तेल डालता, वापस उस दिए में तेल डालता था, और वापस वो दिया फिर फुल ग्लो में जलता था. And that's the way it is. तो हम लोग के अंदर भी वो फ्यूल है, एनर्जी है, इंस्पिरेशन है, जो भी आप बोलो उसको, वो एक समय के बाद थोड़ा कम हो जाती है. हम अपना काम करते हैं तो हमारी एनर्जी, we lose our energy and somewhere it becomes less. So it's important that we kind of refuel ourselves. And when we refuel ourselves, we kind of again re-energize ourselves to handle the things which are at hand. तो उसके लिए अपने आप को बार-बार रिफ्यूलिंग पे स्टेशन पे ला जाना चाहिए. That's what happens with the cars, right? You're driving your cars, you don't fill your tank once and then you say अभी मेरी ये गाड़ी जो है अभी lifelong जो है इसमें डीजल पेट्रोल नहीं भरना पड़ेगा. The more you use a car, the more you have to go to the fuel station. The more you use your mobiles, the more you have to go back to the charging point. That's how simple it is and how logical it is. तो आप लोगों ने अपने आप को constantly, continuously एक fuel source के पास रखना है. And that is why so many of you come for Happy Minds, right? But I would also advise to you, go for a structured learning. Happy Minds is not structured. Happy Minds is that fuel which comes in at once in a while. But if you go for a structured learning, the structured learning से क्या होता है? एक systematic approach मिलता है over a period of time. And as a result of that, you're able to implement things in a very structured way, not in patchwork. And then after you have been through a structured learning, उसके बाद हैप्पी माइंड्स आप अटेंड करते हो, तो जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग में गैप्स है वो भर जाते. That's how it is. So go and opt wherever you are, whichever city you are in, wherever you are listening to me from, find some structured learning there. Go and get yourself trained. And if you're in Pune and if you want to be there with me, you're most welcome to be a part of my structured learning programs. But go in for some structured learning programs. Do connect with people who are growing progressively, who are moving ahead fast. Because growth जो है ना, growth is an inherent requirement of each one of us. हमने जो भी goals set किए, हमने जो भी aspirations हमारे हैं, somewhere growth is the fundamental reason why we have goals, why we have aspirations. Because we want to grow, we want to become better, we want to have things which are not in our life so far. So we want to grow in that area. तो उसके लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा in terms of fueling तो बार-बार करनी पड़ेगी हमें. And so happy, Dinesh, that you're doing it and you're progressing. Thank you for sharing that, and wish you many more sales in the coming months. From 55, God bless you that you move to 100 flats a month, and you create some kind of a record-breaking performance in your organization. I wish you for that. हाँ जी, और कौन share करना चाहेगा? And then we have अरे बात questions आ गए काफी सारे. So he says, why do we have fear so intense that while starting, मैं जब तक ये question का answer देता हूँ, I want you to ask to share a few things, right? And keep your hand, please take your hand up in the in that section, and I'll have your mic on. So why do we have fear so intense while starting or venturing into something new or something big? Why do we have that? See, understand what is fear. Fear is an inbuilt mechanism which we have been blessed with. It's a beautiful mechanism which we all have been blessed with, right? And this mechanism है हमारे अंदर, शरीर के अंदर,
और ये मैकेनिज्म हमें क्या बोलता है, ये फियर क्या बोलता है, ये बोलता है स्टॉप। ये मैकेनिज्म बोलता है स्टॉप, थिंक अबाउट व्हाट यू आर एंटरिंग इनटू, बिकॉज़ ये शायद तुमने किया नहीं है। इट काइंड ऑफ वार्न्स अस दैट मे बी यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। इट डज नॉट से डोंट डू इट। फियर डज नॉट से आगे मत बढ़ो। फियर सेज संभल के बढ़ो, बिकॉज़ ये तुम्हारे लिए नया है। वो वार्न करता है, वो चेतावनी देता है। एंड इट इज सच अ वंडरफुल मैकेनिज्म, बिकॉज़ अगर आपके अंदर ये फियर मैकेनिज्म नहीं है, तो आप अनजान इलाकों में भी ऐसे चल दोगे और मुंह के बल गिरोगे। तो फियर को नेगेटिवली मत समझो, फियर को पॉजिटिवली लो कि फियर जो है ये हमें सावधान कर रहा है। एंड फियर उन्हीं चीजों में आता है जिसमें आपने पहले कभी काम नहीं किया होता, या जिसमें आप कमजोर होते हो। जिसमें आप पक्के होते हो, जिसमें आपने बड़ा अच्छा काम किया होता है, उसमें आपका जो फियर लेवल है वो काफी कम होता है या नहीं होता है। सो कॉन्फिडेंस एंड फियर, दे डोंट को एग्जिस्ट। Confidence and fear, they are enemies. So wherever there is confidence, there will not be fear. Wherever there is fear, there will not be confidence. तो fear क्या कह रहा है? Fear कह रहा है समझो, पढ़ो, परखो और फिर सोच समझ के एंट्री मारो, and when you enter, you will start building your confidence. So the question is, why do we experience fear when we are doing something new, something big? Because it is not something it's not something which you have never done before. तो anxiety होती है, something which is unknown, it's an unknown territory. So fear is positive. It is saying stop, think, read, study, and then move on. Right? So please, हम लोग क्या करते हैं, फियर को रेड फ्लैग मान लेते हैं, रेड लाइट मान लेते हैं कि फियर से अभी नहीं जाने का, डर लग रहा है। तो व्हेन यू गो फॉर पब्लिक स्पीकिंग, तो पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है। तो डर का मतलब क्या है? वो डर ये नहीं बोल रहा है कि पब्लिक स्पीकिंग करो मत लाइफ लॉन्ग। वो डर क्या बोल रहा है? अरे भाई तैयारी कर ले, तूने कभी पब्लिक में बात नहीं करी, प्रिपेयर कर ले, अपनी स्पीच को लिख लो, उसको पढ़ लो, रट लो, 10 बार, 15 बार, 20 बार प्रैक्टिस करो। दैट इज व्हाट फियर इज सेइंग टू यू। तुम उस फियर को इतने उसमें डूब जाते हो और कहते हो डर लग रहा है, डर लग रहा है। अरे डर लग रहा है तो डर 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 का मतलब क्या है? डर कह रहा है तैयारी कर। दैट इज व्हाट द फियर इज सेइंग। तुम डर की बात सुन ही नहीं रहे हो, सिर्फ डर 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 के आप अपना वही डायलॉग बोले जा रहे हो। सो कोई भी नई चीज करोगे तो फियर का होना स्वाभाविक है। इट इज ओके, इट इज वेलकम। सो व्हाई डू यू फील फियर? बिकॉज इट इज सपोज टू बी फेल्ट। दैट इज द जॉब ऑफ फियर, दैट इज द जॉब ऑफ द बॉडी, टू गिव यू फियर। एंड द फियर का काम क्या है? फियर इज ऑल अबाउट वार्निंग यू टू प्रिपेयर। दैट्स हाउ इट इज, राइट? अभी के लिए इतना। सागर, आई एम हैविंग योर माइक ऑन, यू कैन शेयर। Happy morning, sir. हैप्पी मॉर्निंग। नमस्ते सागर, नमस्ते। हाँ Sir, yesterday I have to attend the sub-register Haveli. As you know, I am an advocate. हाँ सर मैंने कल एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए रखे थे 2 महीने, हाँ हाँ और उसमें मैंने बहुत चैलेंजेस में पिछले 3 महीने से झेल रहा था। हाँ और एक ऐसे टाइम आया था कि एक सब रजिस्टर ने वो डॉक्यूमेंट मेरा करने से नकार दिया। हाँ तो उन्होंने मुझे कम से कम 3 घंटे पे मुझे होल्ड पे रखा, और फिर बाद में उन्होंने मेरे से मुझे ऐसा एक रीजन दे दिया कि आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते। तो मैंने उनको सवाल किया, आपने जो सवाल का आंसर दिया है वो मुझे लिख के दे दो। हाँ तो क्योंकि उसके ऊपर मैं उनकी कंप्लेंट कर सकता था। दे हैड गिवन अनरीजनेबल आंसर्स। हम्म, तो फिर बाद में मैंने वो बाजू रखा और दूसरे सब रजिस्टर को कन्विंस किया, एंड मैंने वो डॉक्यूमेंट पूरा कर दिया, लेकिन उसमें भी बहुत हर्डल्स आए। तो सर इसमें मुझे एक लेसन आपसे मैंने जो सीखा था, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हमें बहुत हर्डल्स आएंगे, लेकिन हमें हमारा जो मुकाम है वो पाना है, जो हमें करना है वो पूरा करना है। तो सर मैं जब शाम को आया, कल सुबह 7 बजे से लेके मैं कल 7 बजे तक पूरे दिन पे खड़ा रहता। मुझे एक पानी भी पीने के लिए फुर्सत नहीं थी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था।
और मैंने वो पूरा किया। शाम को मैं जब घर आया तो मैंने मेरे वाइफ से वाह, शेयरिंग की उसके बारे में, और हाँ, तब आपकी जो सीख थी वो मुझे याद आई थी, क्या बात है। तो मैंने वो वाह। पूरा कर दिया। एंड आई फील वेरी ग्रेट। ग्रेट। बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर शेयरिंग सागर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड इफ यू वांट टू सी दिस एज सिंपल शेयरिंग, आपका रोज का काम है, आप जा रहे हो अपने काम पे, एंड देन देयर इज समथिंग व्हिच इज गेटिंग स्टक, समथिंग व्हिच इज नॉट हैपनिंग। एंड नॉर्मली क्या होता है जब नहीं हो रहा होता है, एंड स्पेशली फ्रॉम अ पर्सन ऑफ अथॉरिटी, जो हमसे ऊपर अथॉरिटी में बैठा हुआ है, उसने मना कर दिया, तो फिर हम लोग नॉर्मली यू काइंड ऑफ कम बैक। सो कहने को बड़ी सिंपल शेयरिंग है, बट देयर आर टू थिंग्स टू इट। वन, एक आपका फ्यूचर चैलेंजेस के प्रति आपका रवैया क्या होगा। तो सागर अभी इसने ये चैलेंज हैंडल किया, एंड ही कुड कन्विंस और ही कुड गेट द डॉक्यूमेंट द वे ही वांटेड आफ्टर पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ आवर्स। तो अब फ्यूचर में कुछ ऐसा चैलेंज आएगा, ऐसे बड़ा चैलेंज आएगा, ही हैज क्रिएटेड अ रेफरेंस पॉइंट इन हिज माइंड। अभी समझो इस बात कि आपने अपने मन में एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट कर दिया है। जब फ्यूचर में कोई ऐसा चैलेंज आएगा और जब आप उस चैलेंज को फेस करोगे, तो आपका मन बोलेगा, अरे तूने पहले भी ऐसे चैलेंज को हैंडल किया है, तूने ऐसे भी पहले जो किसी सिचुएशन को तो आई थी, तूने उसको घंटों बैठ के तूने गिव अप नहीं किया था, तूने पकड़ के कर रखा था। तो आज भी वो सिचुएशन है ऐसी, मुझे विश्वास है कि तू आज भी इस सिचुएशन में तू इसके पार चले जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट। एंड we all need to have very powerful reference points in our lives। कि आप देखो ना, रेफरेंस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। if you want to buy something, let's say you want to buy a TV, even if you want to do a course, let's say you want to do my business program course, मैं अपना कोर्स तो मैं अपना ही बोल सकता हूँ ना। तो आपको कोर्स करना है, या आपको कहीं हॉलिडे पे जाना है, या आपको कुछ खरीदना है, so normally what we do is we ask people around, we take a reference from somebody। अरे तुमने कहीं से टीवी खरीदा है, तुमने कौन सा टीवी खरीदा है, अरे तुमने कोई बिजनेस प्रोग्राम किया हुआ है, या तुमने एमडी सर का कुछ प्रोग्राम किया हुआ है, या तुम हॉलिडे में कहाँ गए, कौन से कंट्री गए। सो यू टेक अ रेफरेंस फ्रॉम पीपल जो आपकी नजरों में रेफरेंस देने योग्य होते हैं, आप उनसे रेफरेंस लेते हो, और फिर उनके रेफरेंस को आप देखते हो, समझते हो, और शायद कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, और उनके रेफरेंस के हिसाब से आप कॉल ले लेते हो। तो ये तो हमारा एक तरीका है काम करने का, जीने का। बट देन देयर इज अ रेफरेंस विच वी टेक फ्रॉम अ वेरी close person, somebody who's very close to us, and we keep on taking that reference again and again and again, and that person is us। We keep on taking a reference from ourselves। कोई भी मुश्किल काम आता है, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, तो इमीडिएटली हमारे मन में हम वापस जाते हैं, कहते हैं ये हो पाएगा, हम रेफरेंस लेते हैं खुद से। तो अगर पास्ट में हमारा ऐसा रहा हो जिंदगी जीने का तरीका कि हमने पास्ट में कोई अटेम्प्ट ना किया हो, हमने हार मान ली हो, तो हमारा मन ही हमें बोलेगा, भाई तुमसे ना हो पाएगा। That's how the mind will give you a reference। लेकिन अगर आपके मन में पास्ट में आपने एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट किया है कि यू फॉट फॉर इट, यू स्ट्रगल्ड हार्ड फॉर इट एंड यू गॉट इट, तो आपका मन का रेफरेंस पॉइंट आएगा, यार मुश्किल तो है लेकिन तू कर सकता है, बिकॉज तूने हर बार ऐसा किया है, तू गिव अप नहीं करता है। तो दिस बिकम्स अ रेफरेंस पॉइंट। इमेजिन करो, आप खुद को बोल रहे हो कि यार तू गिव अप नहीं कर सकता है, आप खुद को बोल रहे हो तू कर सकता है, आप खुद को बोल रहे हो कि तुरा तो पास्ट बताता है कि यार यू आर अ फाइटर। तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इससे बड़ी बात कोई आपके बारे में कौन कर सकता है। आप ही खुद के बारे में बोल रहे हो। और इससे भी इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि आपका पास्ट आपका रेफरेंस पॉइंट आपको बोलता है, यार तूने कभी मेहनत नहीं करी है, तू तो हमेशा हार मान के आ जाता है, तू तो कभी एफर्ट नहीं डालता है। तो फिर जब ये रेफरेंस आता है, तो फिर अभी जो सामने का सिचुएशन है उसको हैंडल करने की हमारी हिम्मत कम हो जाती है। इसलिए जो भी सिचुएशन सामने आती है जो मुश्किल है, वो मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डर लगता है, अग्रीड। बट डर तो हमसे कह रहा है कि तैयारी करो, तो तैयारी करेंगे। चाहे वो तैयारी नॉलेज की हो, चाहे वो तैयारी स्किल सेट्स की हो, चाहे वो तैयारी अप्रोच की, एटीट्यूड की हो। तो जो सागर ने स्टोरी शेयर करी, इट इज ऑल अबाउट एन अप्रोच कि मैं हार नहीं मानूंगा। इट्स एन एटीट्यूड, इट्स एन अप्रोच। तो ये भी तो तैयारी है, ये भी तो प्रिपरेशन है, दैट व्हाट अप्रोच आई नीड टू हैव। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी, यू काइंड ऑफ बिल्ड सच हैबिट्स that you will not give up, you will not give up, you will not give up. Not that every time you will have a success, but I will not give up। अब वो गिव अप ना करने से कामयाबी मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो गिव अप नहीं कर रहा हूँ। एंड
ऐसा नहीं है कि आप गिव अप नहीं कर रहे तो आपको हमेशा कामयाबी मिलेगी। आप गिव अप नहीं कर रहे हो तो ज्यादातर कामयाबी मिलेगी। वो है ना स्टेटमेंट व्हिच सेज दैट देयर इज नो गारंटी दैट यू विल बी सक्सेसफुल इफ यू आर पॉजिटिव। नो गारंटी। पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, राइट? बट नेगेटिव थिंकिंग गारंटीज फेलियर। ये बात तो पक्की। But thank you for sharing this, sir. We have Kamlesh. I have your mic on. You can share, Kamlesh. Namaste, sir. Namaste, Kamlesh. Namaste. Okay. I'm going to share my success story and what I've been doing in past few years. Please. So those who maybe in Happy Minds, many people were new. Just a quick background. I'm a life leadership program and my life program participant from back in 2006 year. So since then I have been almost regular participant of Happy Minds. So this is just a quick background with how I associated with Chrysalis. Now coming back to the things, my professional side, it relates to the success story of mine. Because 2008 when I was participant in Chrysalis. So what happened in 2008, Olympics were held that year, and only Abhinav Bindra could win one gold medal that year. And all over the country in a newspaper, they were saying that, oh, we got one Olympic. And I got deep into it. What's happening? Why only one Olympic? At the same time, there are very small countries where they have got 10 gold medals and silvers and this and that, and only one gold medal, and we are celebrating like this. And we are such a huge country. So it was came in my mind that what is that I could do rather than complaining that government is not doing, people are not doing, then what I'm doing. So that was one part. And at the same time, I was working for MNC where I was a manager. So what were our goals that time? How to acquire more IT business, how to grab more business so that we earn millions of dollars for company, so that we get into the profit of our company. So it was MNC, so we were working all over the world. And so that was continuing back in my mind. And in 2006, I decided that having more hirings, having more business, IT business, and then again fighting for that business in terms of participating in things where we get more and more business for company. That is one good thing because company is paying to us, so that's our job. But how long I'm going to continue that? Nothing bad in that, but can I do something for my goals? And तो हिंदी में कहें तो उसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि क्या कुछ उद्देश्यपूर्ण जीवन भी हो सकता है क्या? ये तो कंपनी के लिए पैसे कमाना और खुद के लिए और पैसा कमाना, फिर और पैसा कमाना है तो चल ही रहा है, एंड वो कमा लिया है मतलब, तो क्या कुछ और भी हो सकता है जो कर सकते हैं? तो वो जो 2008 का जो थॉट था कि क्या कुछ कर सकते हैं स्पोर्ट्स में, तो फिर समझ में आया कि जब स्टूडेंट जो है 10th या 12th में आ गया तब उसके लिए स्पोर्ट्स क्या करोगे, वो तो उसका तो काफी कुछ टाइम बीत गया, वो तो अभी उसका लाइन सेट हो गया. So can we do something from primary and middle school age? And then I started MNC High School 5 years ago. This is 6th year. So what? अब ये तो लंबा स्टोरी हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला उसका कि हम अभी तक स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट्स में काफी पार्टिसिपेट कर पाए हैं. मैं खुद एम्प्लॉय था, अभी हमारे पास 20 लोगों की टीम है, जो 20 लोग एम्प्लॉय डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और लगभग इतना ही 20 लोग जो है इनडायरेक्टली, मतलब उनकी शॉप से जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं जो काम करते हैं. तो 40 लोग जो है वो जो स्कूल से जुड़ने से उनका एम्प्लॉयमेंट है, नंबर 1. जो स्टूडेंट्स हैं वो नर्सरी क्लास से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं. ऐसा प्रेशर नहीं है उनके ऊपर नर्सरी क्लास वालों का, बट दे आल्सो नो व्हाट इज फुटबॉल, वॉलीबॉल. नर्सरी क्लास का बच्चा खेलता है, तो दैट मेक्स मी फील हैप्पी दैट नर्सरी से शुरू हो रहा है और डाउन द लाइन ऐसा ड्रीम है कि 10 सालों में यहाँ से इंटरनेशनल लेवल पर बच्चे खेलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है. और तो फाइनेंशियली वी आर साउंड नाउ. इनिशियल ईयर्स में काफी चैलेंजेस हैं, आज भी हैं डेली बेसिस पे. आपने अभी शेयरिंग में कहा कि सेल्फिश वर्ल्ड है, तो चैलेंजेस भी हैं, तो उन चैलेंजेस को हम ठीक से हैंडल कर रहे हैं, कहीं कहीं फेल भी होते हैं, बट स्टिल जो उद्देश्यपूर्ण जीवन है उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और हमारी टीम बढ़ रही है.
इसको लेकर सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है। मैं काफी बड़ा पैकेज और बड़ा बिजनेस हम कंपनी के लिए करते थे, उसमें सेटिस्फेक्शन कम होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें सिर्फ पैसा ही था। पैसा था इन द सेंस हमें कंपटीशन को बीट करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है जिससे हमारा बिजनेस बढ़े, बाकी का जो हो सो हो, ऐसा था। और इसका रिवर्स है यहाँ पर। यहाँ पर हम कुछ कुछ तो अचीव कर रहे हैं जो काफी बड़ी रेंज है यहाँ पर बच्चों की, पेरेंट्स की, उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब ये बैच जो है, जैसे मैं 2006 से हूँ और आज हम 2023 में बात कर रहे हैं, शायद ये रिजल्ट कहीं ना कहीं वैसा ही एसोसिएट है कि 10-15 सालों में रिजल्ट आया है। तो वैसा ही एमएन सर हाई स्कूल का रिजल्ट 10 से 15 सालों में वो वैसा दिखने लगेगा। और काफी सेंस ऑफ अचीवमेंट और बढ़ेगा, मुझे लगता है ऐसा। ना भी बढ़े, मतलब इतना करने से भी बहुत कुछ हो गया, मतलब आगे कैसा होगा पता नहीं, पर जितना हुआ है उससे बहुत सेटिस्फेक्शन है। Great. और I'm so happy. Yes, yeah, you have something else? No, I think this is all, sir. Chalo, thank you, Kamlesh, for sharing. It was, it's a recap because I know your story, and and some of you who don't know Kamlesh, he has been one of the oldest HM Happy Minds attendees, and when he was in Pune, he was regular, but he would not miss any Happy Mind sessions in person here in Pune. And working in an MNC, from there moving on to one fine day he just says I quit, and one of the best companies he could have worked for, and he goes back to his village and he starts a school, struggles for a few years because of so many challenges there, and then today he's sharing here in Happy Minds that the thought which I had in mind, that can we create some international stars in the sports field, and वो शुरू से कुछ कर सकते हैं क्या? And he says, I'm doing to the best of my ability कि हम लोग कहीं district level पे तो पहुंच गए in this 5-6 years. So thank you for sharing that, Kamlesh. And I feel ये सब potential जो हमारे अंदर है उसको maximize करने का जो तुमने ये सिला शुरू किया है, I'm sure this is going to take you places, just like you said कि 2006 में तुमने मुझे ज्वाइन किया और आज 23 में ये 17 साल हो गए। तो 17 साल में एक जर्नी ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया, और जो तुम्हारी जर्नी है ऑफ यू हैविंग चिल्ड्रन विद यू, तो तुम तो मेरे पास एक मेरे प्रोग्राम में थे कुछ घंटों के लिए, तो इतनी कुछ पॉसिबिलिटी हो पाई। एंड आई एम शेयरिंग दिस विद एवरीबॉडी कि जितने भी मेरे प्रोग्राम्स है, तो मेरे पास क्या समय है यार, मेरे पास तो कुछ घंटे ही हैं तुम्हारी लाइफ के, व्हेन यू आर देयर विद मी फॉर अ लाइफ 360 प्रोग्राम, so I have maybe 30-40 hours of you with me, right? But if you talk about it, the schools have thousands of hours of a child. तो वो क्लास नर्सरी से लेके वो क्लास 10 तक वो स्कूल में रहता है, तो हजारों घंटे हैं उस स्कूल के पास, और वो हजारों घंटों में वो स्कूल क्या कुछ करने की पॉसिबिलिटी रखता है। If only the school principals, the school teachers would realize this, and what the child can emerge and become after those thousands of hours, it is phenomenal. And I'm so happy there is one person thinking on those lines. I'm sure there are many other thinking on those lines. But ये जो आगे 10-15 साल का सफर होगा, Kamlesh, I'm sure you will create some phenomenal success stories from amongst your students, and wish you the very best for that. And चलिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आए हैं, क्या आए हैं? Habit seems to be the most difficult part. Starting with new venture, I don't know, I'm excited. Okay, same as Mr. Amit. Anxiety and fear, nothing else. But again, same है शिल्पा की anxiety or fear. They are kind of on the same side. If you have too much of anxiety, it turns into fear, right? Over anxiety हो जाती है. So they are all about preparation. Anxiety says prepare, prepare, prepare. Anxiety says stop, prepare. Fear says stop, prepare. It doesn't say don't go. It says thamba and go. I started with workouts, great. Siley says, habits seem to be the most difficult task. 9 June, I heard you live. Still trying hard to develop a habit for personal health, which should be the priority, as you said in session. Good. I am happy that you're working on your health side, Siley. All the best. Bijit says, natural defense mechanism, safety. Okay. Jaslin Kaur says, get well soon, sir. Thank you so much, Jaslin. Thank you for your wishes. चलो कमलेश, तुम्हारे लिए बहुत सारे लोगों ने कहा है कि the good work, and working with Uddesh, with the purpose is so must. He says we were doing awesome work in the MNC, पैसा भी आ रहा था, कंपनी में करोड़ों डॉलर्स कमा रही थी, लेकिन उद्देश्य क्या है? They just want to make money for themselves. But here I said let's have a purpose, and a purpose driven life is always
very powerful, very powerful. हाँ जी, और किसी का शेयरिंग होगा तो हाथ खड़ा करिएगा, and I can take one or two more guys for sharing. Yes, Anirudh, I have your mic on. You can unmute yourself, please. हाँ जी. सर नमस्ते. हाँ नमस्ते अनिरुद्ध, नमस्ते. मैं जस्ट मेरी एक ही शेयरिंग है. हमने हैबिट्स एक किया था अराउंड 1.5 साल पहले, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे. वो अब तक कंटिन्यू है. क्या अभी भी जिम में ही हूँ. हाँ, मुझे खाली एक ही इसमें बोलना था कि इससे मुझे एक ही सीख मिली है. लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आ ही रहे, उसमें कोई, जैसा आपने बोला है, जब तक है जान, तो वो कभी मरने नहीं वाली है. वो धंधा बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ हो या कुछ भी हो, कुछ हो. बट इस अर्ली मॉर्निंग हैबिट से एक ही है कि सुबह उठते हैं तो मालूम पड़ता है कि जिंदा है और आगे लड़ना ही है. So how much you lost? नहीं, I've gained weight but in muscle weight now. तो अभी so from the original. Actually I have lost 27 kgs. 27 kgs. Yes sir. Wow, क्या बात है. I remember when 27. I've lost 27 kgs and I gained around 7 to 8 kgs in muscle weight now. Muscle weight. Wow. Because I saw you last time. मुझे याद है जब हम कुछ महीनों पहले मिले थे. And I have an image of you when you were with me in SR cycling. So from that Anirudh to this Anirudh there's a huge transformation. Thank you for sharing this. Thank you. God bless you. एक ही है कि वो बस सुबह उठ के एक सुबह अभी भी 5:30 से 5:30 में रोज उठता हूँ. एटलीस्ट 4 to 5 days इन अ वीक. पूरे 7 days नहीं हो पाता, कुछ अलग कमिटमेंट है या कुछ थक जाना है, ये वो. एटलीस्ट 4 to 5 days इन अ वीक होता ही होता है उठना मेरा. बिटवीन 5 to 5:30 वो रोज होता है मेरा सुबह. ग्रेट. इतना भी ट्रैवल हो, कितना भी काम हो, इतना ही है. चलिए, थैंक यू फॉर शेयरिंग. God bless you. Thank you for sharing. And this is something which he was a part of a program which I took 1.5 years back called the Habit Builder. And वो program बड़ा unique था because सुबह मैं वो program लेता था 5 बजे. And that program went on for 3 months in the morning where we spoke about the habits we need to build. बहुत लोगों की डिमांड है कि सर वापस प्रोग्राम चालू करिए, वापस लीजिए. अभी I don't know where to take out time from, but I will do. और मुझे क्या होता है कि वो लाइव सेशन में मजा आता है कि it's a live session. So maybe let's see if I can take the program somewhere in October. मैं वो program फिर सोचता हूँ लेने का. But beautiful response we had. People from all over the country had joined the program, and it was in the morning at 5. So people would log in and they would be ready at 5 to attend the session. So Anirudh was one of the participants, and look at the way कौन सी चीज कहाँ तक किसी को ले आती है. Physically, he's very healthy. He's feeling much more stronger about himself than he ever felt in his life. Chalo, great. My son, Navita says, my son got graduated from Mount Ellison University. Great going, Navita. Came across a lot of hurdles, but was able to only because of Happy Minds. Thank you. And मैं नानी बन गई हूँ. Ay, shabash. Oh my God. This is phenomenal news, Nivedita. All the best to you and congratulations to the entire family. Wow, wonderful. Please, sir, habit builder कीजिए. अरे जान ले लो मेरी तुम. So please start building next leadership trainer who can. We already have. We are working on that. Don't worry about it. We are working on that. हाँ जी. चलो, let's understand this one simple aspect of के एक habit जो आप लोगों ने build करनी है. One of the simplest and the most powerful habits which I feel that you to take away from today's Happy Minds, and the habit is this very statement which you should have in your mind that my future has to be bigger than my past. This very simple habit that my future got to be bigger than my past. If you can just have this as a habit of yours in all aspects of your life, okay, चाहे वो health हो, my future has to be bigger than my past. चाहे वो relationship हो, my future has to be bigger than my past. चाहे वो business हो, my future has to be bigger than my past. चाहे वो समाज में contribution हो, my future has to be bigger than my past. Because past से आप जब future में आ रहे हो, तो you already have consumed certain things. You have become more mature, you have become more learned, you have become more experienced,
You have consumed physically food more, you have consumed people's time more. तो अगर पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में देखें तो हमने 168 आवर्स कंज्यूम कर लिए ना. हमने पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में 7 दिन खाना खाया 3 बार रोज. अगर हम पिछले हफ्ते इस हफ्ते में देखें तो हमने इन 7 दिनों में कितने लोगों का समय लिया. हमने कुछ मीटिंग्स करी, लोगों का समय लिया, टाइम लिया, एक्सपीरियंस लिया. तो फिर जब इतना सब कंज्यूम कर लिया है तो फिर ये हफ्ता तो अच्छा जाना चाहिए ना पिछले हफ्ते के मुकाबले. So if this habit is there, where you keep on asking yourself this question, is my today better than my yesterday? Is my future bigger than my past? So what do I do to make sure my future is bigger than my past? And this habit of you asking this question, you have your habit of accepting this fact that this has got to be bigger than my past, will propel you into the growth phase. और ग्रोथ तो हम सबको चाहिए ना, किसको नहीं चाहिए ग्रोथ? Everybody wants growth. But वो ग्रोथ अपने आप तो आती नहीं है. It doesn't come on its own. You have to build some habits. And one of the habits which you can build is that the habit of not accepting your present at a lower level than your past. The habit of you pushing yourself to creating a bigger future for yourself than your past. And there is no competition with the world. तो मैंने देखो, आप देखो, ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला आपको, इसमें किसी से कंपटीशन नहीं है कि I got to be bigger than so and so guy, I got to be bigger than so and so company. No, I got to be bigger than my past. So the only comparison you have is with yourself. That my knowledge has to be bigger than my past. My tomorrow's knowledge has to be bigger than my past knowledge. My tomorrow's skill sets have to be bigger than my yesterday's skill sets. My tomorrow's approach and attitude to life got to be bigger than my yesterday's approach and attitude to life. My tomorrow's relationship got to be stronger, bigger, powerful than my yesterday's relationship with people around me. My tomorrow's sense of business and how to do business has to be bigger than my yesterday's sense of doing business. My tomorrow's friends and the way I handle my friends got to be better and powerful than the way I used to handle my friends yesterday. My tomorrow's health, physical health, has to be better than my yesterday's health. तो आप देखोगे हर एस्पेक्ट में your future has to be bigger, got to be bigger than your past. And if this is the way you live your life, if this is the habit which you have been able to inculcate, तो आप देखो कि growth will be it will be a part and parcel of your life. Growth, and you will not be separated ever. And I've seen one more habit, another habit which I've seen in people who are growth oriented. And this habit is, सुनो मेरी बात, इस habit को बड़े ध्यान से सुनो. They are terribly demanding of themselves. They are terribly demanding of themselves. ये इतनी डिमांड करते हैं खुद से, दुनिया से डिमांड नहीं करते. माँ और खाना दे दे, मैं और बॉस और पगार बढ़ा दे, कस्टमर और धंधा दे दे. ये भिखू भिखारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं ये आर डिमांडिंग. भिखू भिखारी is the one who keeps on asking on the outside world. Right? I'm saying somebody who's demanding of self. ये खुद से इतनी डिमांड करता है, टेरिबली डिमांड करता है, खतरनाक डिमांड करता है ये खुद से. And I see myself living on that as much as I can. See, I'm demanding of myself. And you've seen it in HM after HM after HM. Now, I'm not taunting about myself. मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं डिमांड करता हूं खुद से. I push myself, and there are even you, all of you who love me, and I'm sure all of you love me. So, चाहे वो घर में हो, चाहे आप लोग हो, Ankit said, you should take rest, and all of you said take care of yourself. तो आपका प्यार है जो मुझसे कह रहा है थम जाओ, आपका प्यार है जो मुझसे बोल रहा है कि भाई हो गया. घर वाले बोलते हैं रचना से चलो कल का HM पोस्टपोन करें क्या, नहीं लें क्या. But I'm so terribly demanding of self. And same is the case when I go to the gym. I demand so much from myself. When it comes to doing masti with people, I'm so terribly demanding of self. अभी हम एहसास से वापस आए, भी हमारे एहसास ग्रुप में अभी भी वो flavor अभी भी है, because I was so terribly demanding of myself that these couples who are there with me in Europe, they should have the most awesome time. कल मेरा सेशन था सुबह. I was the whole day I was with one batch of entrepreneurs, and I had cold cough, चल रहा था सब पूरा, but I was demanding of myself that this session बढ़िया जाना चाहिए. Then I had given a commitment to another company. Their sales team from all over had come.
for a session with me at 6 o'clock in the evening. तो वो बैच खत्म हुआ तो 6 से लेकर 9:30 तक वो सेशन चला. So it's demanding of myself. तो मैंने हमेशा लाइफ में जितना लिया है उससे ज्यादा दिया है, बिकॉज आई एम डिमांडिंग ऑफ माई सेल्फ. अगर मैं किसी का 1 रुपया लेता हूं तो मैं उसको 10 देने की चाहत रखता हूं, उसको 10 के इक्विवेलेंट में सामान देने की चाहत रखता हूं. अगर मैंने 1 घंटा टाइम दिया है किसी को, आई हैव टेकन मनी फॉर 1 hour, आई वांट टू गिव मोर देन 1 hour, ये मैं चाहत रखता हूं. डिमांडिंग ऑफ सेल्फ. तो जो इंसान खुद से सेल्फ डिमांडिंग होता है, फिर वो ग्रो क्यों नहीं करेगा? हम क्या होता है जाने अनजाने में वी आर डिमांडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस. वो सेकेंडरी है, वो वैसे भी अपने कंट्रोल में नहीं है. लेकिन जो अपने कंट्रोल में है वो तो खुद है ना. आर यू डिमांडिंग ऑफ योरसेल्फ? And that's the question. That's where your growth is hidden. The time when you're about to give up and then you ask yourself, can I do a bit more? That's where growth is. So growth is not in doing 15 push-ups if you can do 15 push-ups. Growth is in the 5 extra which you do, where in 15 you get tired and exhausted, and then the next 5 you do. That's where the growth is. And that's where you end up inspiring people. मेरा वो जिम में मेरा ट्रेनर है राजू. And I don't know if I shared this with you or not. अभी मैं 2 दिन से जिम नहीं गया because of this cold. I want to stay away from this. But जब मैं 4 दिन पहले जिम में था, तो he said I did 65 push-ups. And उसका बर्थडे था and he turned 54, 55. He says मुझे 55 करने थे push-ups, but I did 65. And then he says to Rachna, and he says to her कि आपको मालूम है मुझे ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया? ये इंस्पिरेशन मुझे सर से आया. तो मैं जाता हूँ उसके पास इंस्पायर्ड होने के लिए, बिकॉज ही इज सीजन गाय एंड ही नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ माय बॉडी. सीजन है, मेरी एज का है, ही अंडरस्टैंड्स कितना पुश करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए. एंड आई फाइंड हिज वे ऑफ ट्रेनिंग मी वेरी इंस्पायरिंग. बट ही सेज आई एम इंस्पायर्ड बाय सर के, जैसे वो उन्होंने अपने बर्थडे में 50 पुशअप्स किए, 55 पुशअप्स किए, जैसे वो अपने बर्थडे में वॉक करते हैं, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अपने बर्थडे में कुछ करना चाहिए. एंड ही सेड आई डिड 65 पुशअप्स एट द एज ऑफ 55. तो you're demanding of yourself, and he sees me in the gym कि मैं जिम में आके तो मैं डिमांड करता हूँ खुद से. मैं टाइम पास नहीं करता कि इससे बात कर लो, उससे बात कर लो, थोड़ा सा ये करते रहो. मैं नहीं करता. मैं I demand from myself. So you got to ask yourself this very question, that are you demanding of yourself? And if you're demanding of yourself, your future will be bigger than your past. क्यों नहीं होगा? हर एस्पेक्ट में देखो ना. Can you demand yourself? Can you be demanding? And you have to be terribly demanding. And I've seen companies जो अपने आप से terribly demanding रही हैं, they have outgrown the market. They've made a huge impact. Huge impact. So with this, मैं कुछ कनेक्ट हुआ मेरी इन बातों से? It says you are a terrific demander to self and others. तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि पुश करो ना खुद को, खुद से डिमांड करो. ये आदत होनी चाहिए कि मैं अपने आप से और डिमांड कर रहा हूँ. वो हम लोगों से डिमांड तो करते हैं ना बाहर. सो व्हाई नॉट डिमांड फ्रॉम आवरसेल्व्स? आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आप कहीं जाते हो शॉप में सामान खरीदने के लिए, एंड you don't you ask, can I get 10% more? Can you give me 5% more? Don't you demand more? Because you feel it's your right. कि देखिए ना, मांगने से कुछ मिल सकता है. तो जब बाहर की दुनिया के लिए ये रूल अप्लाई करते हो, तो खुद के लिए क्यों नहीं करते हो कि थोड़ा और खुद से मांगू, खुद और से कुछ करूं? So make this a part of a habit of yours, and it will bring in phenomenal results. You मेरा विश्वास करो इसमें. And I want, मुझे आप लोगों से कहना है, I want you to make your friends, relatives come for Happy Minds. बुलाओ ना लोगों को, क्योंकि I see so many of you come every week after week after week. इतने तुम लोग आते हो, तो मुझे लगता है यार तुम लोग ऐसे फालतू तो लोग नहीं हो ना कि किसी को लाइफ में कुछ काम ही नहीं है. जितने भी ये देवेंद्र हैं, अभिजीत हैं, अनुजा है, मेरी लाइफ के जितने भी जो HM आते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ना आपकी लाइफ में कुछ करने को नहीं है सैटरडे मॉर्निंग इसलिए आ जाते हो सुनने के लिए.
This means something valuable is happening here in Happy Minds, right? Something wonderful is happening. And that is why you're coming week after week, month after month, years. Some of you coming for 10 years, 15 years for Happy Minds. Now I want you to take it next level. I wanted to bring more people here. But the more people we have, the more people will realize how much more they can do in life. And your ecosystem, आपके friends, आपके relatives, जब वो grow करेंगे और आप उनकी company में हो, see, together you will make a great world. एक अकेला इंसान thought अच्छे लेके चल रहा है और आसपास के लोग अच्छे thought लेके नहीं चल रहे हैं, तो उसकी जान जाती है सबको परिवर्तन में लाने में. And if all of them have thoughts which are growth oriented, life becomes so easy and relaxed. So get as many people as possible for Happy Minds. मेरा इतना तो विश्वास करो ना मेरे ऊपर कि तुम्हें वो गाली नहीं देगा, अरे कहाँ मेरे को 1 घंटा मेरा टाइम पास करा दिया, कहाँ मुझे ये मेरा जिंदगी का पूरा दही कर दिया. Nobody's going to kill you for bringing them to Happy Minds. इतना तो विश्वास है ना मुझ पे. So let's make Happy Minds a huge success. Let's have more and more people there. झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए. Sir, that is applicable for myself. शाबाश. Thank you so much for this. Could be very useful thing to implement. Absolutely, everything which I say is useful. मेरे पास टाइम ही नहीं है फालतू बातें करने का यार. नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है. एक ही जिंदगी है, इस जिंदगी में कहाँ फालतू बातें करूंगा. जो मैं बोलता हूँ यूजफुल ही होता है. So Anuja has a big note. My biggest learning and achievement after Life 360, as I have not taken ST in my past. Arey wah. And the words fall short to express every enriching experience after Life 360. Thank you so much. Thank you so much. God bless you all. I just want to share that my life is around the corner. And if you want to be a part of my life, you want to be there with me and some wonderful people for 1 week or so, without watches, without mobile phones, and for the most awesome spiritual journey of your life, then mere saath aa jao. A very beautiful combination of practicality and spirituality. So dono ka combination, that how a practical life can be infused with a spiritual flavor, and it's going to be the most awesome experience of your life. And seats are limited. We have only 30 seats with us. Unfortunately, that's the only capacity which we have with us. तो इससे पहले बैच भरे, इससे पहले कि हम आपको ले ना पाए, आप अगर आपकी इच्छा है, then you apply, and we will be meeting in Delhi, and from Delhi we'll go to Uttarakhand. It's a beautiful location which we'll be going to, and I'm looking forward to investing some time with some awesome Chrysalians there. So if you are keen, then be a part of it as soon as possible. And God bless you all. Thank you so much for being there for today, and I'll see you in a much more healthy condition next HM. Sorry for this physical state of mind, but I'm doing the best which I can, and balancing everything in my life. But next week, for sure, I'll be in a better state for all of you. Okay? So have some wonderful sharings for me lined up, and live a life in a way which will make you proud of yourself this week. The weekly shot is there given to you. With this weekly shot, now the week has to be lived awesomely well. Okay? God bless you all. Thank you, Santosh, Pratnya.